So, good evening, everyone. Am I audible? Yes. Yes. Okay. So, let's start with last week. So, what recap? A quick recap will do. So, I hope you solved the exercises. I solved them for you in the last week. And then I hope that you went through the material that I shared. And let's go through the recap quickly. So, can anyone tell me what we discussed the last class? Who was present in the last class? Any one of you? Okay, no one was present, I guess. So let's do a recap. So we started with defining what a charge is. Okay. So what exactly is a charge? Anyone? And it's very basic. Okay. First, let's start with current. Then it would be easy. Okay, current. This everyone knows, right? What current is. What is current? Can anyone tell me? What makes the current possible? Electrons. Yeah, not just electron, it's the flow of these electrons, right? Yeah. So what is an electron? Okay, Abhiram, that's dq by dt. Very good. It's the mathematical relation. Okay, what is an electron? Electron is a charged body or a charge. Okay, it is a negatively charged body. So movement of these electrons makes possible the flow of current. Great. So then we went on and discussed what voltage was. Can anyone tell me what voltage or a potential difference is? Anyone? It's the work done in moving 1 coulomb of charge from one point to another. And how can we represent this? We can represent this by del V is equals to del W by del Q, where del Q is work done or the energy required in moving the charge from one place to the other. Just a second. Then what did we discuss? Okay, since we are talking about energy, let's talk about energy. What is energy? Can anyone tell me? Anyone? What's energy? No response. So the screen is visible, right? I hope the screen is visible. Just a second. Okay. What is energy? Anyone? Let's make this class a bit lively. Come on, we are just 4 of us are here, right? So it won't be a a lively class if no one talks and it's just me. It will get boring way too soon. And it's a 2-hour class. So let's interact a bit. So can you tell me what is energy? I'll wait. You can open your notes and everything. Anyone? Do you want me to wait?
Work done to move a charge. Okay. Anyone else? See, we're talking now. Anyone? Should I wait for more responses? Okay, so Ability to energy, do work. We can say energy is the ability to do work. In yes, simple we words. can. Yeah. We can say that it's the ability, or yeah, we can say it's the ability to do work. That's correct. Okay, and oh yeah, and how do we represent this energy as? It is, I didn't mention. Voltage is represented as volts, and current is represented as amps or amperes or simply amps. How is energy denoted as? What? No. That's not Joules. how we. Yeah, joules, Joules. or we can. Yeah, joules, or we can denote it as watt second or watt hour. It's of course. Okay, what is power then? Power. Anyone? A mathematical relation. I'm also looking for a mathematical relation too. So if you We can know a say mathematical, yeah. Mhm. potential of the energy. How much there is a potential in that particular energy, we can say. It's the power. Potential in energy, I don't think so. Work done by time. I mean, that's yeah, we can say that. Or the better thing to say is rate of. It's the rate of change in energy which is spent while doing some work, or if it Yes, expands. I mean, anything can. with reference to time, this is perfect definition. Yeah. So P is what? D by dt. Then what did we discuss? Power, energy, anything else? I guess that this was it. Oh, active and passive circuit elements. We forgot. Okay, what is an active element? Can anyone tell me? Active element. Anyone? Active element? Okay, anyone? I mean, it's even if it's wrong, we are just learning, right? Sir, can I speak in Hindi? Sure. Gona is saying, I am not seeing your screen. Can anyone tell me if they are able to see my screen, which I'm sharing right now? Yes, Yes, sir. we All all are able clear. to see your screen, sir, very clearly what you are writing. Okay, great. Gona, I think you should rejoin, or I don't know why you're not able to see it. Everyone is. Yeah. Someone was saying, can he say in Hindi? Yeah, you can. I mean, I don't. I can be multilingual. It's just that I don't know how many of you are comfortable in Hindi, so that's why I'm speaking in English. But if you want me to repeat things in Hindi, I'll be happy to do that. So yeah, someone was saying who wants to say in Hindi. Anyone? सर जो भी एलिमेंट से वोल्टेज क्रॉस कर सकता है उसको पॉजिटिव एलिमेंट्स बोलते हैं Positive. I'm talking about सॉरी active पैसिव element. एलिमेंट पैसिव एलिमेंट आई मीन वोल्टेज पास कर सकता है. मैं अगर बैटरी बना दूं और मैं उसको चार्ज कर रहा हूँ, वोल्टेज पास हो रहा है. वैसे वोल्टेज नहीं, करंट पास होती है. तुम्हारे को करंट बोलना चाहिए. किस करंट पास हो रहा है हाँ,
करंट पास तो होती है अगर मैं वो बैटरी को चार्ज कर रहा हूँ, तो क्या बैटरी पैसिव एलिमेंट है? कोई और? एनीवन एल्स? I mean, you can take a look at your notes too. I'm perfectly fine with that. Okay. Okay. Active is the one that is capable of generating energy. So can anyone give me an example for this? एक example बता दो. Generator set, hydroproject turbine. Yeah, generator, enough, one example is enough. So now what would the passive element be? It's the opposite of that, right? Element which cannot generate energy. Yeah, so what I'm writing is legible, right? If anybody has a problem with my handwriting, let me know. I'll try to write a bit clearly. Which cannot generate energy. Example, can anyone tell me? Capacitor. Capacitor, yeah. Great. And what was there? Let me see. Oh yeah, independent voltage sources. Okay, what is an independent voltage source or independent sources? Independent voltage source means it's like battery. बैटरी हो सकता है जो हाँ, जिस बैटरी हो सकता है, पर अगर मतलब मैं तुम्हारे को बोलूं कि इसको डिफाइन करो तो कैसे करोगे? वो चलो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को डिफाइन करो. कोई भी एलिमेंट जिससे वोल्टेज सप्लाई हो सकता है. हाँ, सप्लाई तो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस से भी हो सकता है. डिफरेंस क्या है? What's the difference? That's the point. So an independent voltage source is one which can supply. So doesn't matter what amount of current it's supplying. The difference between the difference between the nodes. So the potential difference between the nodes it is connected to remains constant. Okay, it can supply constant amount of voltage source irrespective of how much current it's supplying. That's an ideal voltage source, and it does not depend on how much current is flowing into the circuit. Similarly, for a independent current source, we can say the same thing. A current source doesn't matter what is the potential difference between the nodes of the current source. It can supply constant amount of current. And now the complete opposite of it is dependent source. So a dependent voltage source. Yeah. Now Prasenjit, बताओ मेरे को independent voltage source क्या होगा अगर डिपेंडेंट हो गया कि मतलब उसका जो अमाउंट ऑफ वोल्टेज है जो वो जनरेट कर सकता है, इट डिपेंड्स ऑन some part of the circuit. I mean, it could be current flowing through its circuit or something like that. Like for example, first of all, yeah, a dependent source is represented by a diamond shape. Let's say I'm representing it as phi, and then there's some circuitry here, and there's a constant voltage source here of 20 volt. So yeah, here the dependent source, that is the dependent voltage source, that's the this 5i dependent voltage source, depends on the current flowing through this resistive element, right? So iska matlab hai ki that's a dependent voltage source. Similar thing can happen with a dependent current source. So I don't have to repeat it, I guess. Okay. Now what was there? Done. And this was it. Okay. So we solved a bunch of questions, or 24. So the exercises are given in the lecture material every time it's being given to you. So I solved the exercise one the last week. So if someone
who hasn't gone through that yet, I mean, the NPTEL team must have conveyed the YouTube link. So I record everything and then I upload it to my YouTube channel. So you can watch it over there as well. So let's start with week 2. Next page. Okay. Who has gone through week 2's lecture? Can anyone tell me? Amit? Gona? Prasenjit, Abhiram? Anyone? सर मैं एक दो ही Everyone? देख पाया हूँ। Okay, so let's discuss everything then. I wanted to discuss the exercise, but let's start with, and it's important so that you will also know stuff when it's happening. So let's start with resistance. So we started with defining what a resistance is. So क्या कोई मेरे को बता सकता है resistance क्या होता है? Anyone? If he or she is like to speak, what resistance is? सर कोई भी एलिमेंट जो करंट को यूज करता है, कंजम्पशन करता है। Okay, consumption नहीं, मतलब कंजम्पशन तो इंडक्टर भी करेगा, बट वी डोंट कॉल इट रेजिस्टिव एलिमेंट, सो आई डोंट थिंक सो दैट्स अ गुड यूज ऑफ वर्ड्स. व्हाट वी कैन से इज रेजिस्टेंस इज एन एलिमेंट दैट impedes or opposes flow of current. Does anyone have problem in this statement? Yeah, Abhiram is correct. Yes. So how do we define resistance? We define it in the form of resistance is defined as ohms, or simply this symbol, right? So, but there's a way we can calculate the resistance as well. So let's say I have this wire. So resistance depends on the resistivity of the material. Resistivity is nothing but it can be defined as ohm. Just a second. Ohm meters, right? Ohm meters. So resistivity of any element is the ability of the element to obstruct the flow of electron. Right? And it's represented as ohm per meter. No, sorry, ohm meters. Okay. So let's say this is a wire which has resistivity rho. It's represented as rho, RHO, and it has some cross-section area, let's say A, and the length is L. So how can we define R? Can anyone tell me? Okay. So R depends on the resistivity, right? And how will it depend on the length and area of cross-section? Okay. Let's say this area of cross-section is more, what would happen? So resistance is the ability to obstruct the flow of electrons. So if resistance is more, what would happen? Area of cross-section is more, what would happen? रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। R is equal to rho L by A. Yeah, it's rho L by A, but I want to know what would happen. Why its resistance is inversely proportional to the area of cross-section. One is writing on one will increase and another one will decrease.
Yeah. No, I know, but why? Why does it happen? If I increase the area of cross section, resistance decreases. Why? फ्लो करने के लिए Because उसको ज्यादा जगह मिल रहा है. yes, the area is more, so there would Surface be area less बढ़ number of collisions. Less number of collisions. So if the number of collisions is less, resistance would be less. And if the length is more, obviously, then the greater the length, the resistance would increase because it's the property of the material. Okay, so next, what did we discuss after resistance? It was Ohm's law, right? What is Ohm's law? Can anyone tell me what is Ohm's law? Yeah. No one? Current is directly proportional to the voltage. Okay, so Ohm's law states that voltage and current vary proportional, are directly proportional to each other. It's not on here. Voltage and current are directly proportional. And what is the constant of proportionality here? If I remove this proportion, Temperature constant. no, that's not the constant of proportionality. I'm saying if I remove this proportionality, I have to insert something, right? A constant. What is that? Resistance. Resistance, right? Yeah, V equals to IR. So this is your Ohm's law. So according to Ohm's law, it says that V and I vary proportionally and R is the proportionality constant. So can I draw something like this? Is this the only possibility of how V and I can vary? Is there anything else? Will they vary only linearly or can they vary non-linearly as well? Can anyone tell me? यहाँ पे सर यहाँ पे वोल्टेज के साथ साथ करंट भी बढ़ रहा है ड्राइंग के हिसाब से, ग्राफ के हिसाब से. हाँ. वोल्टेज के साथ बढ़ रहा है तो हम्म. करंट तो घटना चाहिए सर. करंट घटना चाहिए. करंट क्यों घटना चाहिए? हम लोग जब ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो ट्रांसमिशन, ओके जस्ट अ सेकंड. अभी मैं सिर्फ एक नॉर्मल सर्किट की बात कर रहा हूँ. ट्रांसमिशन लाइन में एक प्रॉपर्टी होती है कांस्टेंट पावर की. जी उधर पावर कांस्टेंट रहती है. मैं यहाँ पे कोई पावर कांस्टेंट नहीं कर रहा. मैंने सिर्फ ये बोला है कि इफ दिस इज द इक्वेशन, हाउ विल वी एंड आई वेरी? दे आर वेरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट? दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. सो लिनियरली वेरी करेंगे या फिर इज देयर एनीथिंग एल्स? सो ये जो आर है, आर हमेशा कांस्टेंट रहेगा क्या? अगर आर कांस्टेंट है तो वो लिनियरली वेरी करेंगे. इज दैट करेक्ट? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग. क्या सिर्फ यही तरीका है? अच्छा, लेट मी मेक इट इजी. क्या करंट, क्या, जस्ट अ सेकंड, क्या कोई एलिमेंट ऐसे वेरी कर सकता है वोल्टेज और करंट को नॉन लीनियरली? कर सकता है. आई मीन इस पार्ट के जो रेजिस्टर्स को हम बोलते हैं लीनियर रेजिस्टर, और जो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको बोलते हैं हम नॉन लीनियर रेजिस्टर. We call them non-linear resistors. And what is a non-linear resistor? Can anyone tell me an example of a non-linear resistor? So these are diodes. Okay. You must have seen their VI characteristics, right? They vary like this, right? Anyone who has doubts can be feel free to ask me. I mean, it's a live interaction. Abhiram, Amir. No, sir, no doubt from my side. It's all clear. Yes. So next is power, I guess. If I'm leaving any topic in between, let me know. I mean,
I've written down all those topics. I just have to. Okay. So earlier I defined power is d by dt, right? This is true. But अगर मेरे पास एक resistive circuit है, let's draw a circuit. Current कितना है? 100 by 25, right? सर पावर dt by dt मतलब dq by dt. Sorry, अच्छा dw by dt. मैं de लिखता हूँ, but अच्छा. dw by dt is better. Yeah. So yeah. So what's the power in this circuit? Power consumed by the 20 ohms resistor. Can anyone tell me? How do we write that? P is what? P is equals to VI, right? And I, how can we represent it? If this is, let's say, R and this is V. 5 ampere ohms. I. No. I'm saying let this be R and let this be V. I shouldn't have written it like this. Just a second. Let me do this. Now tell me, what is I? V by R, right? So P becomes V square by R. Correct? Or we can write this as this as well, right? I square R. Is that correct? Is the notation correct? Yes, yes. Yes. So let's say V is 100 volts, R is 20, I is 5. So what is P now? It's 500 watts, right? Is this correct? I mean, yes. Just say yes if you don't have any answer. I mean, it makes me easier. Okay, makes my life easier, sorry. Next is nodes, branches, and loops. Nodes, branches, and loops. Let's draw a circuit. Okay, now can anyone, okay, so what are nodes? Let me define nodes. So a node is a terminal between which an element is connected. Right? So now tell me, how many nodes are there? 1, 2, 3, 4, 5. 5. I also don't know the answer, so I have to find out. So how if someone can say one is saying 5, the other? Anyone else who has a different answer? No, right? Let's do it. So this is a node, right? Is this a node? Yes, yes. This is also a node, but these two nodes are at same potential, right? Am I right? These two nodes are at same potential, so it's collectively a single node, right? Okay. Now this, and this, all four are also connected to the same potential. So these four are also same nodes, right? And this is one node. So now how many nodes are there? If anyone can tell me, 1, 2, 3, 4, 4, right? Yes. Oh, is this correct? Yes, sir. So I told you, right, between which an element is connected. So an element here is connected at say 2 nodes, but collectively those nodes are 1. So it's 1, 2, 3, 4, 4 nodes. Okay, now let's go to loops. Let's do branches. I forgot branches. Okay, what is a branch? Can anyone tell me how many branches are there in this node? No, let's do loops one so that everything is clear. Loops. What are loops?
How many loops are there? 3. Yeah. So there are 3 loops, right? A loop is any way in which we can start from one potential and come back to the same potential. Now tell me branch. So what do you understand by a branch? Anyone? Elements Branch are लूप के connected. अंदर दूसरा भी कोई एलिमेंट हो सकता है. लूप के अंदर दूसरा भी एलिमेंट हो सकता है. हाँ, ये 2 एलिमेंट है ना यहाँ पे, दिस वन एंड दिस वन. मैं समझा नहीं. ये एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है ना. Just We can say तो it is the connection between the nodes, different connections between the nodes. yeah, you can say it's the connections between nodes. Now tell me how many branches are there? Anyone? 5. Okay, one is saying 5. Can anyone, if it's the same answer, do let me know. Four, I guess. 4. Okay, let's see how many branches are there. So branch is 1, 2, 3, 4, and so it's how many? 1, 2, 4, 4 plus. So how many are there? Can anyone tell me? I'm getting 6. 6 branches. Please explain, sir. Please explain. Yeah, I'm explaining. So is there anyone who is also getting 6 branches? No? Okay, let's do it. So a branch is nothing but in which one element can be connected, right? So this is one element, one branch, second branch, third branch, fourth branch, fifth branch, and sixth branch. सर लेकिन Yeah. वो वोल्टेज और वोल्टेज सोर्स और R1 तो सीरीज में है ना, तो क्लब नहीं होता क्या? ब्रांच नहीं है ना वो. ब्रांच क्या है? ब्रांच इज नथिंग बट इन विच वन एलिमेंट कैन बी कनेक्टेड बिटवीन 2 नोड्स, सक्सेसिव नोड्स. वन एलिमेंट इज कनेक्टेड, राइट? सो इसमें एक एलिमेंट कनेक्टेड है, इसमें एक है, 2 हो गए, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है और ये छठा है. और हम इसको चेक भी कर सकते हैं. ब्रांचेस आर नथिंग बट इफ वी Yes, yes. These are these six are things. n plus l minus 1, right? n is number of loads, l is number of loops minus 1. So number of nodes कितने बोले थे मैंने? मेरे को बताओ. Can anyone tell me what are the number of nodes? एक और बारी. 4, sir. 4. Number of loops? Now, number of loops are 3. तो ये कितने हो गए टोटल? 6. So क्या 6 ब्रांचेस आए मेरे पास? सर तो इसका मतलब वहां पे जितना एलिमेंट है ब्रांच भी उतना ही होगा. हाँ, जितने एलिमेंट है ब्रांचेस उतने हैं. सिंपल. मतलब इसको Yeah. वैसे सिंपली तरीके से वैसे ही देख सकते हैं. Yeah. वहां पे. So node branches or loops इसलिए important है ताकि KCL और KVL में you know how to apply that, right? Because KCL is nothing but node law and KVL is mesh law, right? So let's move ahead. ये कौन सा नंबर था? चौथा. 5th. Let's start with Kirchhoff's law. So how many Kirchhoff's laws are there? 2 Kirchhoff's voltage law, Kirchhoff's current law. Okay, let's start with Kirchhoff's current law first. So we know a charge can neither, we know the law of conservation of charge, right? Can anyone state the law of conservation of charge? Anyone? What is the law of conservation of charge? Okay, the law of conservation of charge states that a charge can neither be created nor be destroyed, right?
We can say the net charge remains constant all over of a system. Yeah, just a second. Let me write. I forgot. Just a second. I'll get Okay. back to you. A Okay. charge can neither be created nor be destroyed. It can flow from one point to the another. Okay, what were you saying, Amit? The net charge of an isolated system will always remain constant. It is the same meaning what you said, sir. Yeah. It's the same. So, so let's say if this is the case, a charge can neither be created nor be destroyed, and it can be transferred from one place to another. So, if let's say I have this circuit over here, I1, I2, I3, I4, and I5, right? So if I have this circuit, I know if a charge is entering this node, it should leave the node, right? It can't stay at that node forever. Exactly. It can't be consumed. It can't be destroyed, right? Yes. Dipali, am I getting? Dipali, are you getting it? Yes, sir. Yes, sir. Huh. So that's what I'm saying. If a charge is being transferred from one point to the another, it has to move out of that place too, right? If it's coming to a node, it has to go back from that node. It has to go back from the node again. So what we can say is basically, if a charge is if we can say that about the charge, we can say that about the current as well, because charge and current is one and the same thing, right? So it's not one and the same thing. I mean, the property of the flow of current charge makes current. So the same thing can be talked about this current as well. So Kirchhoff's law for Kirchhoff's current law states that current entering a node must be equal to the current leaving the node, because a charge can be transferred from one place to another. It can neither be created nor be destroyed. So Dipali, tell me, for this, if just a second, I'll draw it a bit clearly. This is a node I1, I2, I3, I4, and I5. Take the current entering the node to be positive. Can you tell me how can we write this law? Incoming current I1, I2, Hmm. I1, I2, I3. Huh. Must be equal to I4 and I5, right? I4 and I5 plus. Yeah. So that's what the current Kirchhoff's current law is. Is it fine with everyone? Does anyone have questions? Yes, sir. It's fine. Prasenji? Sir, Okay. it's fine. It's fine, right? Yes, sir. Okay. Second is Kirchhoff's voltage law. Okay. Now, can anyone tell me what Kirchhoff's voltage law is, and how is it based, and on what thing is it based on? Anyone? Amir, do you want to try? What is Kirchhoff's voltage law? I mean, you know, right? Dipali? Yes, sir. Okay. Tell me then. Oh, It just is a second. the, we can say, sum of every voltage drop in a same loop for any closed network is always equal to 0. Yeah, algebraic. Yeah, I mean, that's what the law says, but algebraic sum of voltages in a In a loop, as in in a a loop, okay, must be equal to 0. oh, Or we can say it is the law of conservation of energy also. oh yes, that's what I wanted. So just a second, I didn't define mathematically how this is. This can be written as k and it should be equal to 0, right? Where n is the number of nodes and k is the current entering that node.
or K is any current entering or leaving that node. Okay. Now tell me, Kirchhoff's voltage law, how is it based on conservation of energy, Amir? There is no loss in it. There's no loss in it. Okay, but I mean, can you clearly state how does just like I stated, right? The law of conservation of charge plays a role in this Kirchhoff's current law. I want you to state the same thing for Kirchhoff's voltage law as well. Sunny energy can be neither created nor be destroyed. It can be from one form to another form. Yeah, and then so let's say I have this circuit, right? I don't need this anymore. R1, R2, let's say this is V1 and this is V2. So how can we how does the voltage law come into picture? I mean, how does the loop law come into picture? It's the algebraic sum of all the loops, right? Where L is the number of loop and K is the voltage in that loop, right? So now, can anyone tell me how did we arrive at this law from conservation of energy, law of conservation of energy? Okay, I'll do it. So what is a loop? Loop is I move from A and come back to A, right? A loop is what? A, B, C, D, A, right? जी sir. So what is the law of conservation of energy? It states that energy, if I move from one point to the another, the energy the energy can neither be created nor be destroyed. If I move from one point to the another and then come back to that point, the energy must be the same, right? It can be opposite in nature. Like for example, there's this 1 point and 2 point. I move 1 coulomb of charge from 1 to 2, right? Energy I spent is minus E. Is that correct? But then I come back to 2 from 1. When I come back to 1 from 2, the energy I spent is, let's say, E. So the algebraic sum of these two energies must be equal to 0. Is that correct? Yes, sir. Yeah. So same thing. Voltage is nothing but delta W by delta Q, right? I told you. So if I start from one loop to the another, my sum of all the voltages must be equal to 0. That's what the Kirchhoff's voltage law states, and that's how it comes from conservation of energy. Is this explanation clear? Does anyone have any questions or doubts? Deepali, do you have a doubt? No, sir. No, sir. Okay. So voltage law, after that, this is 6. Connection of resistance. So how many connections are possible for a resistor? 2 connections. Okay, what is the first? Series connection, right? So what is a series connection? I say that I didn't need to draw this. I don't know why I draw. Okay, R1, R2. So these two are connected in series. How do we know that? Deepali, how do we know that these two are connected in series? क्या sir क्या? If total resistance is R1 plus R2, R1 plus R2. No. What I'm asking is, how do we know that it's a series connection? Why don't I call this a parallel connection? सर ये R1 के साथ One R2 coil. कनेक्ट करके बैटरी में क्या है ये Or we can say that the current flowing in both the resistor is same, right? yes, it is not increasing, it is remaining same. Yeah, current flowing
through both resistances are same. Is same, sorry. Is same, right? So let's say I is the current. So how, let's do KVL. We must have done it, right? So the KVL states that V is equals to IR1 plus IR2, correct? R1 plus R2, and therefore R equivalent is R1 plus R2. That's why this is a series connection. Yes, sir. Now let's go to parallel connection. Now Dipali, tell me, what is a parallel connection? How is this a parallel connection? Yeah. In a parallel connection, what is same? Voltage are same voltage. Yeah. Voltages between the two voltages are same for the two resistances, right? So V is equals to what? V is equals to I1 R1 and V is equals to I2 R2, correct? Or I can say I1 is equals to V upon R1 and I2 is equals to V upon R2. What is I then? I is nothing but V 1 upon R1 plus 1 upon R2. And that's how for a parallel connection, R equivalent is written like this. Is this correct? Yes, sir. Yeah. Is there any other possible connection apart from these two? R1 Can- R2. Sir, Yeah. Tell me. You were saying something, Dipali? R equivalent is equal to, also write down R1 R2 upon R1 plus R2 Yeah, you can write cross that. multiplication. Yeah, cross multiplication. That's Okay. yeah. So, is there any way else we can represent connection of the resistances? There's one, there has to be more than a way, right? Where we can't say clearly how it's a series, if it's a series connection or a parallel connection. Star delta. Anyone went through star delta transformations or star delta connections? जी सर, सुना हूँ लेकिन उतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मोटर का करंट के लिए पहले स्टार यूज करके फिर डेल्टा यूज करते हैं ताकि करंट फ्लो कम हो. करंट बाद में I know. ना अभी yeah. Star delta connection. Let's go through star delta connection once. What exactly is a star connection? It has a common point of connection. R1, R2, R3, right? And this is a common point of connection. Am I correct? Yes, sir. And a delta connection is nothing but something like this. And do you know what the best part is? We can represent a star connection in a delta terms and delta connection in star terms. Okay. So let's go how we can do that. So let's start from star to delta. Okay, Dipali. So we have a star connected winding. Star connected resistors in between this figure. Now I want you to tell me how can we represent R, A, B, and C in terms of R1, R2, R3. Sir, RA represent, RA is equal to, एक्चुअली कंफर्म नहीं है मुझे भी, लेकिन ट्राई करती हूँ. RA is equal to RB into RC upon R3. RA is equals to
RB into नहीं, वो तो RB RC तो डेल्टा की वो है ना, क्या कहते हैं, कनेक्शन। सो RA RB तो डेल्टा की कनेक्शन है ना। R1 plus R2. सर एक बार क्वेश्चन फिर रिपीट कर देंगे प्लीज सर, सॉरी। हाँ Oh, no worries, no worries. You should be saying that. Okay, so what I was saying is, can anyone let me do it like this? That when you'll be more okay. It's clear, right? 1, 2, and 3. What I was asking is, how can we how can we get these RA, RB, and RC values? I'm trying to go from star connection to delta connection. मैं star connection से delta connection बनाना चाहता हूँ अपने resistors को। मैं पूछ रहा हूँ उसकी derivation हम कैसे करेंगे? किसी को कोई आइडिया है? No sir, no idea. उतना तो नहीं आता. नहीं, it was in the it was given in this lecture's notes. Anyone gone through them? किसी ने भी किया हो? नहीं सर। Okay, let's see. RB RC इक्वल टू R1 R2 R3 हो सकता है। क्या बोला मेरे को RA नहीं। RB RC इक्वल्स टू R1 R2 R3। नहीं, मैं करता हूँ, वो थोड़ा अच्छा है। लेट्स स्टार्ट। जो ओके, स्टार वाले की बात करते हैं। ये दो कनेक्शंस है 1 2। जस्ट अ सेकंड, लेट मी राइट इन टर्म्स ऑफ ये 1 2, फिर तुम्हारे को कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आई विल गो RYB। ओके, नाउ टेल मी फॉर दिस स्टार कनेक्शन व्हाट इज RYB? 3 फेज। नहीं, sorry, RYB, I mean resistance between the YB terminals. I'm talking about resistance R1, between R2, the R3. RY terminals, sorry. Yeah, resistance between RY terminals. Can anyone tell me? RA It's R1 plus R2, right? Is it हाँ, confusing? Is R1, it R2. confusing? No. First, let me be clear. Is the drawing a bit confusing? Shall I draw in a separate for star connection for data connections? Is it No confusing sir, a bit for you? आप पहले से फिर से explain कीजिए. What are these two different things? One is Okay. So we know star connection. A star connection has a common point of coupling, right? So R1, R2, and R3 are connected to the same node while being at separate, and their extremities are at the separate terminals, right? But for a delta connections, they are connected in a triangular form where RA's nodes are connected to RB, and then RB's node is connected to RC, and RC's is connected to RA. Okay, that's how we define a star connection and a delta connection. Right? Okay. So let me draw it a bit clearly. I guess you are not able to get it. Okay, and this is terminal 3. Now between terminal 1 and 2 for this star connection, what is the resistance? Equivalent resistance. अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, equivalent resistance कितना है? R1 plus R1 R2, plus right? R2 R1 plus R2 Yeah, R1 plus R2. It's correct. Same मैं कह सकता हूँ R2 3 के लिए. R2 3 के लिए R2 R2 plus plus R3 R3. ठीक है क्या है? R2 plus R3. Just a second. और 3 1 के लिए मैं कह सकता हूँ 1 plus R1 R3 R3 या plus R. R1. जैसे भी मतलब कर सकते हैं. Great. Now let's do for okay. Now I have a delta connection. This is 1. This is 2.
Now tell me for this delta connection between R12, what is the equivalent resistance? RA. It's what? RA. Yeah. No, it's not RA. It's not What? RA. So forget about this 3. Just a second. I mean, this terminal is. Don't take 3 into consideration. See if this is not there. Now tell me what is the equivalent resistance between R1 and between terminals 1 and 2. It's RA parallel RB plus RC. plus RC. Yeah. So it's nothing but RA in parallel with RB plus RC. Dipali, did you get me? No, sir, no. Okay. Forget about this terminal. RB and RC are in series. Ha. And then if they're in series, now I'm looking from the 1 and 2 terminal. What is the equivalent resistance? Okay, sir. Okay, sir. RA Understand. parallel? RA Yeah. parallel. So what? RA parallel? RB and RB. RC. Yeah. Great. So similar for R13, what can we write? R13, then RA, RB, RC same. Same, right? RA parallel RB plus RC. No, it won't be same. I'm also writing. It's RB parallel RA plus RC. RB parallel RA plus RC. Yeah. Oh, okay. Now for 2-3 terminal, can anyone tell me? RC parallel Yeah. plus RA, RB. So yes. Now I have these 3 equations, right? Now I know R12 star should be equal to R12 delta if I'm trying to transpose them from one circuit to another. Like I drew before, right? I drew it in same circuit, right? But now the circuit are different, represented different, but the terminals are same. So R12 star should be equal to R12 delta. Am I correct about it? Anyone? If you're not getting it, please let me know. I mean, that's how it's. It is the similar thing. Yeah, because terminals are same. What I'm doing is I'm Terminals are same, transforming but star this from is to star and delta. that one. Yeah, I'm transferring from star to delta. So that's why I'm saying if R12 star should be equals to R12 delta, right? If I'm transferring star formation to delta configuration. So now tell me, if these two are same, so how can I represent it? R1 plus R2 should be equal to RA parallel of RB plus RC. Correct, Dipali? Dipali? Dipali, are you not getting it? Yeah, yes. No, sir, no. Sir, Oh. actually, हिंदी में बात कीजिए ना बीच में थोड़ा. Everyone here is not, I guess, everyone here is comfortable with Hindi? Yes, sir, no issue. Okay, see, दीपाली मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को एक स्टार फॉर्मेशन है, लेट्स से ये स्टार सर्किट गिवन है, ये मान लो एक टर्मिनल 1 और 2 के बीच में कनेक्टेड है, 1, 2 और 3 के, ठीक. अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको स्टार से डेल्टा में तब्दील कर रहा हूँ, हाउ यू से, मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ फ्रॉम स्टार टू डेल्टा. So if I want to convert it properly, the resistance what was between 1 and 2 terminals in star connection should be equal to what is there in the delta connection, right? Yes, sir. हाँ. So पहले मैंने क्या किया, मैंने स्टार की टर्म्स में सारे डिफाइन कर दिए, टर्मिनल्स के बीच में जो वो है कि कहते हैं रेजिस्टेंसेस. अब मैं धीरे धीरे उनको इक्वेट कर रहा हूँ एक दूसरे के टर्म्स में. समझ आई दीपाली? Okay, okay. Anyone else who didn't get it? I mean, I can repeat it time and again if you want me to. नहीं, आप ठीक से समझ आ गया सर, ये तो फार्मूला पे आप सिर्फ यही लगाना है जो आप. Yes. So अब सबको इक्वेट करते जाओ.
सबको इक्वेट करते जाओ, मतलब R2 R3 तीन इक्वेशंस हमारे पास गिवन है। R2 प्लस R3 भी हो जाएगा RB पैरेलल ऑफ RA प्लस RC, एंड R3 प्लस R1 इज इक्वल्स टू RC पैरेलल ऑफ RA प्लस RC। ये सारी इक्वेशंस गिवन है, इंटरलिंक्ड है, इसमें हम सॉल्व कर सकते हैं एक एक वेरिएबल के लिए, राइट। सो इफ वी ट्राई टू फाइंड फॉर R1, हमारे पास क्या आएगा दीपाली? कैसे सॉल्व करेंगे पहले ये मैं आपको बताऊं। मुझे R1 निकालना है, मैं कैसे निकालूंगा दीपाली? R1 को एक ही साइड में रख के फॉर्मूला एक लगाएं। साइड में रख के R2, हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। ठीक है, मेरे पास फर्स्ट एंड थ्री क्वेश्चंस में R1 गिवन है, या ऐसे नहीं करते, लेट्स सी हम कैसे निकाल सकते हैं। फॉर फर्स्ट एंड थ्री में फर्स्ट को थ्री में से सब्ट्रैक्ट करता हूँ, राइट। मेरे पास क्या आएगा दीपाली? इक्वेशन 1 माइनस ऑफ इक्वेशन 3। आई एम सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी थर्ड इक्वेशन फ्रॉम 1। सो क्या आएगा मेरे पास? आएगा R2 माइनस ऑफ R3 इज इक्वल्स टू RA पैरेलल ऑफ RB प्लस RC माइनस RC पैरेलल ऑफ RA प्लस RC, है ना दीपाली? हाँ यस सर। और मेरे पास एक इक्वेशन गिवन है R2 प्लस R3 इज इक्वल्स टू RB पैरेलल ऑफ RA प्लस RC, है ना दीपाली? अब मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा। ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा 2R2 इज इक्वल्स टू RA पैरेलल ऑफ RB प्लस RC माइनस RC पैरेलल ऑफ RA प्लस RC प्लस RB पैरेलल ऑफ RA प्लस RC, राइट। ठीक ठीक कह रहा हूँ दीपाली, यही होगा? किसी को कोई इसमें इसमें डाउट है? मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया दीपाली, 4 and 5 इक्वेशंस को मैंने ऐड कर दिया, राइट, R2 निकालने के लिए। दीपाली, प्रसेनजीत, राजा, आमिर, अभिराम, कोई कोई जी जवाब जी, दो। नहीं नहीं ठीक है सर, मैं तो उनका वेट कर ठीक रहा है ना? था। ये तो ठीक है। हाँ दीपाली, सही किया ना मैंने? फोर्थ एंड हाँ फिफ्थ वी सही है, एडेड। सही किया। R2 R3 तो कैंसिल हो गए ना, माइनस प्लस, तो हाँ R2 हाँ माइनस, हाँ किया। हाँ, तभी 2R2 आ R2 गया। ही बच गया लेफ्ट साइड अब में, मैं बाकी तो ऊपर। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। RA RB प्लस RA RC डिवाइडेड बाय RA प्लस RB प्लस RC माइनस ऑफ RA RC प्लस RB होगा ना, ये RC पैरेलल RB होना चाहिए। RC पैरेलल RC के लिख रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। RBA, RB RC divided by RA plus RC plus RB plus RA RB plus RC RB divided by RA plus RC plus RB। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दीपाली अगर ऐड करेंगे? ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, यस यस ये और ये कैंसिल, RB RC और RB RC कैंसिल हो जाएंगे। यस। जी, सो मेरे पास आएगा RA RB प्लस RA 2 RA RB अपॉन RA प्लस RB प्लस RC, राइट। यस। सो R2 मेरे पास आ गया RA RB अपॉन RA प्लस RB प्लस RC। सो यस अब मैं ये सिर्फ एक के लिए करूंगा, बाकी सबके लिए टीडियस हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ ये करते कैसे, दैट वुड बी दैट इज व्हाट इज इंटरेस्टिंग, राइट। सो मैं फिर से एक और बारी ये इसमें बनाता हूँ। दीपाली, इतना समझ आ गया ना? एक्सक्यूज मी सर, सर हमारा एक और लेक्चर यस था सर यस। 5 से 7 का, अब हम क्या करें, वहां जाएं कि यहाँ कंटिन्यू करें? सेम चीजें डिस्कस हो रही हैं। अगर तुम्हारे को उधर जाना है, नो वरीज। अगर तुम्हारे को इधर ठीक समझ आ रहा है है, कंटेंट्स आर तो सेम, देन आई एम कंफर्टेबल हियर ओनली। कंटेंट्स आर सेम। हाँ ओके, ठीक है। हाँ दीपाली, मैं पूछ रहा था, ये समझ आया ना R2 कैसे निकला?
यस सर, यस सर। हाँ, अब मैं बाकी सब के लिए सॉल्व नहीं करूंगा, R1 R3 के लिए, वो क्योंकि टीडियस हो जाएगा। मैं बताता हूँ तरीका कैसे इनको निकालने का। ओके, लेट्स डू इट देन। आई विल रिमूव दिस। इसके नोट्स तुम्हारे को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ये जो भी मैं क्लास में लिख रहा हूँ NPTEL टीम तुम्हारे को भेज देगी, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट राइटिंग एनीथिंग। ठीक है, तो मैं बेसिकली बना क्या रहा हूँ, मेरे को चाहिए ये। हेलो, हाँ हाँ, यही नोट्स है ना लेकिन सर? नहीं, मैं थोड़ा सा इनको अच्छे से लिखूंगा, ये थोड़े अभी तो क्लास की चल रही है, पर मैं यही सब भेजूंगा तुम, मतलब जो मैंने किया है क्लास में। ओके ओके ठीक। ठीक। तो अब मेरे को बताओ लिखने का तरीका क्या है, मतलब अब मैं डिफाइन कैसे कर सकता हूँ अपना R2, अगर मेरे को डिफाइन करना है। R2 इज नथिंग बट जो इसके एडजेसेंट में है कनेक्टेड, उनकी मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय ऑल ऑफ दोज रेजिस्टर्स इन द डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन, राइट। R2 क्या है बेसिकली? R2 आया RA, अरे RB है, जस्ट अ सेकंड, R23 RC पैरेलल RA plus RB। Oh my God, I did it wrong. Oh my God. You know what's the mistake that I did? Can anyone tell me? आमिर, एक मिस्टेक की है मैंने, क्या की है? सर मैंने R23 स्टार को इक्वेट कर दिया R13 डेल्टा में, और मेरे को भी समझ आया नहीं, ना ही मैंने देखा। नो वरीज, अब मैं वापस सॉल्व नहीं करूंगा, मैंने तुम्हारे को बता दिया कि सॉल्व कैसे करते हैं। क्या किया था सर, क्या किया था? मैंने R23 को R13 डेल्टा से इक्वेट कर दिया था, जबकि मेरे को इसको और इसको इक्वेट करना था, अच्छा, RA plus RBA। कोई बात नहीं, मिस्टेक्स हैपन। लेकिन सर ये सब इक्वेट करने के ये क्या मतलब, जो अभी आप स्ट्रिक्ट बता रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कैसे करते हैं। मेरे को सिर्फ ये है कि अगर आपको कहीं पे स्टार रेजिस्टर्स गिवन है, उनको डेल्टा फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हैं। that's why I'm trying to tell you how they are derived first, and then I'll tell you how to write them. So डेरिवेशन तो समझ आ गई ना, इक्वेट किया और उसके बाद मैंने सेम फॉर्मूलाज में ऐड करके अपने उनके टर्म्स में लिख दिया। So let's delete everything. Now I'll tell you a trick on how to do it, क्योंकि बार बार तो तुम हर बारी कैलकुलेट तो करोगे नहीं, तो किस तरह से लिखते हैं मैं ये बताऊंगा। राइट, ओके, RA RB RC। सो व्हाट यू डू इज, अगर मेरे को स्टार के वो चाहिए इन टर्म्स ऑफ डेल्टा, मैं कैसे लिखूंगा? R1 इज इक्वल टू, सॉरी, देखो ये मेरा R1 है ना, दिस इज R1 राइट। यस यस। अब मैं कह रहा हूं R1 को लिखने के लिए क्या करो, उसके जो डेल्टा साइड के एडजेसेंट रेजिस्टर्स है ना, उनको मल्टीप्लाई कर दो। हमने मल्टीप्लाई किया RA को RB के साथ, और फिर उन डेल्टा साइड के जितने भी रेजिस्टर्स हैं उनको ऐड कर दो। सो क्या हुआ, RA RB प्लस RC। एम आई करेक्ट? यस सर, यस सर। तो दिस इज अ ट्रिक टू डू कन्वर्जन्स क्विकली, क्योंकि बार बार तो तुम ये कैलकुलेट नहीं करोगे, है ना। यस। सेम थिंग R2 के साथ भी लिख सकता हूँ, तो कोई मेरे को बताएगा? दीपाली, अब तुम बताओ R2 कैसे लिखेंगे? RA इंटू RB। नो, ओ सॉरी, R2 लिखना है RB इंटू RC। नो, ये R2 है, इसके एडजेसेंट है RA। RA RC। हाँ, तो हम लिखेंगे कैसे? एक्चुअली मैं लिख रही थी इसलिए, RA कोई बात इंटू RC अपॉन RA प्लस RB प्लस RC। लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स मिलेंगे तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आमिर, R3 बता दीजिए जल्दी से। जी सर। R3 बताओ कैसे लिखेंगे? मैंने अभी भी एक ट्रिक बताई।
मेरी ट्रिक क्या थी? दीपाली बताएगी। दीपाली मेरी ट्रिक क्या है? एडजेसेंट रेजिस्टर्स जो डेल्टा कनेक्शन रेजिस्टेंस के ऊपर लिखने का। मल्टीप्लीकेशन कर RB दो प्लस और RC डिवाइडेड बाय RA प्लस RB प्लस RC। RB प्लस RC होगा या RB इंटू RC होगा? RB इंटू सॉरी हाँ, RB RC डिवाइडेड बाय RA प्लस RB प्लस RC, दैट्स प्लस हाउ यू RC। डू। यस या डन। नाउ अब हम करेंगे डेल्टा, सॉरी, अब हम करेंगे डेल्टा निकालेंगे किस तरह से हम RA। उसके लिए मैं पूरा वापस से इक्वेशंस तो लिखूंगा नहीं, मैं तुम्हारे को सीधा ट्रिक ही बताऊंगा, ठीक है? इज इट फाइन विद एवरीवन? ओके सर, वो तो समझ आ गया कि कैसे क्या फॉलो अप करना है आप। हाँ हाँ हाँ, ट्रिक्स आर बेटर है, क्योंकि कौन याद रखता है ये सब। So you never, no one of you, so anyone who attended the last week's lecture, no one attended, right? So let me quickly introduce myself. I forgot to introduce this class. I mean, such a rookie mistake. So I am Swastik Sharma. I am a PhD scholar at IIT Kanpur. I am a PMRF scholar as well, and I am in my third year of PhD. And I did my bachelor's from NIT Srinagar in 2021. And then I joined IIT Kanpur in 2021 only. I'm a direct PhD student. And I've been told to teach this class or do a doubt clearing session. So that's what I'm doing right now. I'm also from Srinagar, sir. Yeah, I can tell. I'm from J&K only, so I live in Jammu. Okay, so अब मेरे को बताइए RA लिखने का तरीका कैसे लिखेंगे? दीपाली नहीं पता ना, मैं बताता हूँ। हमें क्या करना है, जैसे RA हमारे को फाइंड आउट करना है, राइट? सो RA निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली उसके एडजेसेंट रेजिस्टर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा और जिस रेजिस्टर से वो रिप्लेस हो रहा है उससे डिवाइड कर दूंगा। कैसे? 1 multiplied सारे, by R2 हाँ, सो R1 R2 प्लस R2 R3 सारे ये जैसे डेल्टा वाले में, इस स्टार टू डेल्टा में मैं नीचे वाली जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन थी सब में, राइट? डेल्टा टू स्टार में न्यूमरेटर कॉमन रहेगा। सो R1 प्लस R2 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सॉरी R1 R2 प्लस R2 प्लस R2 R3 and R3 R1 is common and I divided by simply R1. Is it correct? That's how you write it quickly. So this would stay common. And then I divide it by R2. And again, this will stay common. And then I divide it by R3. Okay, any doubts? And if you want to solve this, you can solve all of those equations and you'll get the same results. I mean, I don't want to go into that because it's time consuming. Yeah. Dipali, you were saying something? I think, sir, denominator opposite resistance. क्या बोला? मेरे को एक बार बोलना फिर से, मेरे को सुनाई नहीं दिया। RA डिनोमिनेटरला R3 पाहिजे का? नहीं, उसका ऑपोजिट रेजिस्टेंस कौन सा है? RA का ऑपोजिट कौन सा है? ए, मतलब जिसको रिप्लेस। हाँ, any doubt? मुझे लग रहा है R3 चाहिए नीचे। Just a second, I must be confused. So you have it. Let me use some other colors. So I'm talking about the electricity. What is the unit? Prasenjit, your mic is on. Amount of units for how much? Prasenjit. What is the number of units for 199? Prasenjit. जी सर। Your mic is on. Can you mute yourself yes, if you want to? दूसरे लेक्चर जो साक्षी जी दे रही है वो भी एट सेम टाइम अटेंड कर रहे हैं, तभी माइक ऑन है। अच्छा, आप वो अटेंड करना चाहें आप कर सकते हैं, no worries. Okay, so yeah, I'm wrong. It's the opposite resistance. So RB का opposite कौन सा है? R2 and RC का है R1. So that's how you do it. If you want to check, you can just simply equate all of those resistance and then get the answers again. I won't go through it now. So what I want to do is I want to go through the exercises. So there are exercises given in the end of the lecture. So I want you to go through that. So let's start one by one.
So this is the first question. Does anyone know how to solve it? Amir? Okay, so we'll solve. So can anyone tell me what's the apply KCL around this A node? So what is the KCL around this node? It's simply I1, the current entering, plus 2I1 is also entering, and I2 is leaving. So that means I2 is nothing but 3I1, right? So now it's telling to find V2. So V2 is what? Minus 20 I2. Sorry, it's not minus. So V2 is 20 I2. That means V2 is 60 I1. Now how can you find I1? Apply mesh equation around this one node. So that would be 10 15 I1 minus 10 minus 15 I1 minus 20 I2, which is equal to 0. Now 10 minus 15 I1 minus 60 I2, right? So what is I1? I1 is 10 upon 75, right? Can anyone find if it's correct? Yeah. If it's correct, then just equate this in 1 and V2 would be found. Great. Amir? Yes, sir. Find the voltage of V1 and V4 in figure 2.57. या बताइए मेरे को इसका आंसर. इसका आंसर आएगा V1 जो है. अच्छा, वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या कहता है? V1 कैसे लिख सकते हैं हम इन टर्म्स ऑफ 15 वोल्ट्स? 15 into 1000 divided by R1 plus R2 plus R3 plus R4, right? ये आ गया V1. और V4 हम कैसे लिखेंगे? 15 into 6000 divided by R1 plus R2 plus R3 plus R4. Okay? आमिर, ऐसे लिखेंगे ना वोल्टेज डिवाइडर जब रूल लगता है? सर ठीक है, बिल्कुल ठीक है. लेकिन ये जो है ना V4 सर. हाँ, V4 वाला 15 मल्टीप्लाइड बाई 6. अच्छा, नीचे वाला और 4 ठीक आ गया सर. दीपाली ये सही है आंसर V1 और V4 का? एक्चुअली सर मैं अभी लिफ्ट हुई थी, थोड़ा मोबाइल का प्रॉब्लम. ओके. क्या बताया समझ में? मैंने बोला V1 जो है वोल्टेज डिवाइडर रूल लग रहा है. सो वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या कहता है? V1 इज इक्वल्स टू हमारे पास जो 15 वोल्ट है मल्टीप्लाइड बाय दैट रेजिस्टर डिवाइडेड बाय द टोटल सम ऑफ रेजिस्टर्स इन द सर्किट, राइट? यस. सो ये कितना आ रहा है? V1 15 into 1000 डिवाइडेड बाय R1 plus R2 plus R3 plus R4. ओके. और सिमिलरली V4 हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो आएगा 15 into 6000 डिवाइडेड बाय R1 plus R2 plus R3 plus R4. 10,000 आएगा नीचे वाले का सम, उसके साथ कैंसिल करके दोनों का वैल्यू निकल जाएगा. ओके, ग्रेट. सो अब हम चलेंगे. नहीं, उसके साथ माइनस क्यों करना है? नीचे वाले का सम मतलब तुम डिनोमिनेटर की बात कर रहे हो या V4 की बात कर रहे हो? डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं. हाँ, वो तुम कैलकुलेट कर लेना. आंसर्स तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि आंसर्स आर ऑलरेडी गिवन इन द पिक्चर टू. सो जो तुम्हारी एक्सरसाइज शीट है, मैं सिर्फ तुम्हारे को बताऊंगा कि आ कैसे रहे हैं. तुम मेरे को सॉल्व करना है तो मैं कर सकता हूँ. ठीक है सर, ये तो सिंपल है. हाँ, कैलकुलेशन ही तो करनी. यस. थर्ड क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन. ओके, नाउ लेट्स गो टू थर्ड क्वेश्चन. दीपाली, Vx, Is और I3 फाइंड आउट करना. हम कैसे करेंगे? अच्छा, मेरे को ये चीज बताओ, ये 30 ओम्स का जो सर्किट है, रेजिस्टर है, और 60 ओम्स का रेजिस्टर, ये कैसे कनेक्टेड है? पैरेलली. ये वाला. ओके, ओ वाला पैरेलल है. पैरेलल है, तो इसका वो क्या होगा? R30 पैरेलल R60 कितना है? 30 into 60 upon 30 plus
60, राइट? तो ये कितना आ जाएगा? 180 divided by 90, 30 आएगा। 20 आ जाएगा। 20 20 आएगा ना, 1/3 और 20, राइट? yes sir। सो आर इक्वलेंट कितना है? हाँ हाँ हाँ, कौन बोल रहा है? राजा। हाँ ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। 80 हाँ, आर इक्वलेंट कितना आ गया मेरे पास? 80, 20। राइट? हाँ वो 80। 80। और तो आई एस कितना आ गया? सप्लाई करंट 100 डिवाइडेड बाय 80, ठीक है? ये कितना होता है? 5/2 0.25, राइट? 1.25, राइट? 1.25 यस। यस। ओके, सो आई एस हमारे पास आ गया 1.25। अब हमारे को चाहिए वी एक्स। सो करंट, पहले हम वी एक्स से पहले फाइंड आउट करते हैं। मुझे एक चीज बताओ दीपाली, ये करंट कितनी होगी? IS के बराबर। आई एस के बराबर क्यों होगी? सीरीज नहीं, नहीं, ये resistance तो कम पैरेलल हो- है ना, पैरेलल। पैरेलल है ना, तो आई एस की टर्म्स में, रुक जाओ शांत, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। आई को हम कैसे लिखते हैं? जब यहाँ पे करंट आ रही है आई एस, ये डिवाइड हो रही है आई में और आई थ्री में, राइट? yes sir, ये तो प्लस हो जाएगा दोनों का। हाँ, तो आई की करंट को कैसे लिख सकते हैं हम? आई एस इंटू द ऑपोजिट रेजिस्टेंस विच इज 60 डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस विच इज 90। करेक्ट दीपाली? ऐसे भी लिख सकते हैं। यस सर यस। हाँ, तो आई एस कितना आ जाएगा? मतलब आई आई वैल्यू ऑफ आई कितनी है हमारी? 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइडेड बाय 90, 0.8333 एम्पेयर, राइट? सो वी एक्स हमारे पास आ जाएगा, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो 30 से, विच इज नथिंग बट 25 वोल्ट्स। आंसर 25 है। अब मेरे को चाहिए आई थ्री। आई थ्री कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अब मेरे को आई एस पता है, आई पता है, आई थ्री क्या होगा दीपाली? इस नोड पे जरा केसीएल लगाओ, क्या होगा? मैं बताता हूँ। आमिर, ए नोड पे केसीएल लगाना। इसमें माइनस हो जाएगा सर, ये वाली रेजिस्टेंस एक। आई एस इज इक्वल्स टू आई प्लस आई थ्री। नहीं, करंट एंटर कितनी कर रही है? आई एस। लीव कितनी, कौन कौन सी कर रही है? आई और आई थ्री। तो बराबर है। केसीएल क्या लगेगा? जी, आई एस इक्वल्स टू आई प्लस आई थ्री। तो तुम्हारा करंट कितना है हमारे पास? आई एस कितना गिवन है? 1.25। 1.25 एम्पियर। आई कितना है? 0.833। तो आई थ्री कितना आ जाएगा? कैलकुलेट कर लो। 1.25 minus 0.833। 0.4167 एम्पियर्स। ओके, कहीं पे ठीक कोई है ज्यादा लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, दीपाली तुम पूछ सकते हो। इट्स नॉट लाइक मैं आंसर नहीं करूंगा। नहीं सर नहीं सर। सर, आया एक समझ में। कंफ्यूजन है मुझे सर, ये जो हमारी क्लास हो रही है ना, ये हाँ सब हाँ, डिप्लोमास के लिए, ये सर सब पर्टिकुलर कोर्स के लिए है ये कि सबके लिए? देखो, जो तुम्हारा कोर्स में, मैं तुम्हारे को इस क्लास का उद्देश्य बता देता हूँ, या इस क्लास का मिशन क्या है या विजन क्या है। ये जो तुम्हारी क्लास है, ये हमारे को बोला गया है तुम्हारे डाउट्स क्लियर करने के लिए, ठीक है? जी मुझे बिल्कुल। यहाँ पे तुम्हारे को पढ़ाना कुछ नहीं है। तुम्हारे एक वीक में लेक्चर होता है, तुम वो लेक्चर पढ़ के आओगे, तुम्हारे पास डाउट्स होंगे, यू कैन आस्क मी योर डाउट्स एंड आई विल सॉल्व देम फॉर यू, दैट्स इट। नहीं, एक्चुअली मेरा जो कोर्स है दैट इज सेफ्टी इंजीनियरिंग, और इसमें पूरा फिजिक्स है, उसमें जो मैंने वीक के लेक्चर्स। सेफ्टी इंजीनियरिंग तुमने फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एनरोल नहीं किए क्या? नो सर, तो तुम्हारे पास ये लिंक कहाँ से आया? मेरे को तो ईमेल आ गए। अच्छा, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल भी मैंने किया था, लेकिन कर हाँ, रहा हूँ मैं सेफ्टी इंजीनियरिंग। कोई बात नहीं, नॉलेज ज्ञान मिल रहा है। बेसिकली मैं कर रहा हूँ सेफ्टी इंजीनियरिंग, कोई बात नहीं, आई विल कंटिन्यू विद दिस। तुमने एनरोल नॉलेज किया ऐड ही होगा होती जा तभी रही है, तो टाइम तो वेस्ट नहीं। तुम्हारे पास एनरोल किया तो इसका आ रहा है। दीपाली, तुमने तो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही एनरोल किया ना? हाँ 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 सर। और हाँ, मैं तो तुम, इसलिए। हाँ, तो वीक 2 के जो लेक्चर हुए हैं, आई एम जस्ट हियर टू क्लियर दोस डाउट्स, राइट? आई डोंट हैव टू टेल यू एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग कि कैसे क्या बनता है। इट्स जस्ट दैट आई वांटेड टू आस्किंग यू, यू टोल्ड मी दैट यू डिडंट गो थ्रू दैट वीडियोस, तभी मैंने तुम्हारे को ये पूरा एक्सप्लेन किया। मुझे जबकि क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है, मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, जो तुम्हारे डाउट्स होंगे वो सॉल्व करने हैं। बट सिंस
तुम्हें बोला तुम नहीं गए हो, मैंने तुम्हारे को पढ़ाया, बट ऑल आई वुड से इज अगर तुम्हारे को ये क्लास नहीं समझ आई, डोंट वरी, गो थ्रू दोज लेक्चर्स। लेक्चर्स से नहीं जाना, लेक्चर मटेरियल से जाओ। इस क्लास का लिंक तुम्हारे को मिल जाएगा फ्रॉम एनपीटीईएल। ये क्लास अपलोड होगी यूट्यूब पे। वापस इस क्लास से गो थ्रू करोगे, तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. Okay, let's go through 2.4 now. Can anyone tell me ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? एंड पॉइंट के रेजिस्टेंस पहले सॉल्व करेंगे 6 ओम हमारे 4 हाँ, हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे और हम पहले में जाएंगे। बेसिकली वी नीड टू कैलकुलेट आर ए बी। अब लास्ट में इन दोनों रेजिस्टर्स, ये दोनों रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है। कौन से सर? हाँ, Six सीरीज में 6 और कनेक्टेड है। हाँ, तो इन दोनों की सीरीज कनेक्शन पैरेलल में कनेक्टेड है 15 ओम के, करेक्ट है ना? वो कैसे पूरी होगा Yes, सर? sir. मैं बताता हूँ, रुक जाओ, फिर से इस उसको बनाते हैं एक बार ये अच्छे से। 6, 14 और 15 तीनों कनेक्ट है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ। 8 18 ओके, सो ये 15 ओम आया यहाँ पे, और इन दोनों का एडिशन होके क्या आएगा आंसर? 20 ओम। अब मुझे बताओ 20 और 15 पैरेलल में कनेक्टेड है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, तो इन दोनों का पैरेलल सम क्या आएगा? 20 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 35, राइट? यस। तो इसका आंसर कोई बता देगा जल्दी से? मैं ही बता देता हूँ, 60/7। ठीक है, 8.57 आया सर। हाँ 8.57, 60/7 करोगे 8.57 ही होता है। ओके। ठीक है, अब इन दोनों के इक्विवेलेंट से मैं इनको लिख देता हूँ। इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या है? 60/7। अब 60/7 20 के पैरेलल है। यस। हाँ है। तो हम लिखेंगे 20 इंटू 60/7 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 60/7। जल्दी से बता दो इसका आंसर। क्या है इसका आंसर? 6 ओम, राइट? अब मैं इस सर्किट को इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से लिख देता हूं। अब 6 और 4 पैरेलल में है दीपाली? बिल्कुल 6 और सर, 4 6 और पैरेलल 4 में। पैरेलल में है। यस सर। तो 6 R6 पैरेलल R4 कितना होगा? 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 10। 2.4, राइट? यस। सो मैं इसको 2.4 से लिख देता हूं। अब मुझे बताओ 12 और 2.4 पैरेलली कनेक्टेड है या क्या है? नो सर, पैरेलली तो नहीं। क्यों नहीं है पैरेलली? पैरेलली पैरेलल है। पैरेलल है। पैरेलल है ना, क्योंकि सेम नोड पे कनेक्ट। दो जा रहे हैं ना। हाँ, अब हाँ, कनेक्ट हो गया ना, पहले सर्किट कंप्लीट नहीं था। वाह वाह। तो 2.4 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 16.4, आंसर कितना आएगा? मुझे पता चल गया था जब तुम बोल रहे थे, पर मैंने सोचा ठीक है 14.4, सॉरी 16.4 नहीं होगा, 14.4 होगा। आंसर कितना आएगा? 2। अब मैं इसको लिख देता हूँ इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से, वो आ गया 2। अब मुझे बताओ दीपाली, 16 और 2 सीरीज में है। यस सर। तो ये कितना हो जाएगा? 18, और 18 और 18 पैरेलल में है, वो कितना हो जाएगा? 9 होगा, हाफ हो हाँ, जाता है जब। अब और इस ये क्वेश्चन में सीरीज में। हाँ, अब एक क्वेश्चन है इसमें इसमें इस रेजिस्टर की वैल्यू नहीं गिवन है। तो जब तक इसकी वैल्यू नहीं गिवन है, ये तीनों सीरीज में है, अब जो भी इसकी वैल्यू होगी आंसर आ जाएगा, हम जैसे हाँ। भी गिवन है आर ए बी। ठीक है,
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। दीपाली, तीनों सीरीज में आ गए, ये 8 9 और जो भी ये रेजिस्टेंस है, और फिर वो Yes, जो भी yes, इक्विवेलेंट होगा आर ए भी होगा, इन तीनों का एडिशन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1 2 3 4 5। इसमें बोल रहा है स्विच एस इज ओपन राइट नाउ एंड आई हैव टू कैलकुलेट नो लोड when the switch is closed the device is divider is said to be loaded. Okay, first calculate no load value of v naught. Okay, अभी पहले हमारे को नो लोड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब स्विचेस ओपन है। अगर स्विचेस ओपन है दैट मींस करंट कोई फ्लो नहीं कर रही इस 12,000 ओम से। मेरे को बताओ, क्या इस 12,000 ओम से नहीं कोई है, करंट नहीं करेगी, है ना? नहीं करेगी तो अब जब सर्किट करेगी। हाँ, दीपाली अब जल्दी से बताओ वी नॉट की वैल्यू क्या होगी? स्विचेस ओपन है, यहाँ पे कोई करंट आ नहीं रही, तो जो भी करंट यहाँ पे आ रही है वही हाँ। करंट यहाँ पे भी जा रही है। तो वी नॉट की वैल्यू क्या होगी? 25 इंटू 20,000 डिवाइडेड बाय 25,000, करेक्ट? यही होगी ना दीपाली? यू डोंट हैव टू सॉल्व इट इन फुल, जस्ट मेरे को बोल दो यही वैल्यू होगी, हाँ या ना? यही होगी ना? समझ में नहीं आया सर। ओके, ठीक है। दीपाली एक चीज बताओ, अगर मैं इस स्विच एस को क्लोज कर दूं, यहाँ पे मान लो कोई आई करंट जा रही है, वो इधर और इधर दोनों जगह डिवाइड हो जाएगी। यस। पर अगर स्विचेस क्लोज नहीं है तो जो करंट यहाँ पे फ्लो कर रही है वही करंट यहाँ पे भी फ्लो करेगी पूरी। एक ही साइड चलेगी। हाँ हाँ। हाँ, तो दैट मींस दिस सर्किट इज राइट नाउ सिंपली अ सीरीज सर्किट जिसमें दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में है, राइट? यस। हाँ। तो जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो उस एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वैल्यू क्या होती है? जो हमारे वोल्टेज सोर्स की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय उस रेजिस्टर की वैल्यू डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस, राइट? ओके 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 सर। हाँ, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 25 इंटू 20,000 डिवाइडेड बाय 25,000, राइट? इसकी वैल्यू आएगी 20 वोल्ट। ठीक है, अब मैंने क्या किया दीपाली, अब मैंने स्विचेस को क्लोज कर दिया। यस। अब मुझे बताओ, ये दोनों सर्किट्स पैरेलल में हो गए, ये वाला रेजिस्टर 20,000 वाला रेजिस्टर और 12,000 वाला रेजिस्टर हाँ पैरेलल हो गए। पैरेलल हो गया। अब आर इक्विवेलेंट बताओ मेरे को कितना होगा, जो यहाँ पे मैं लिखूंगा इस इधर 12,000 into 12 20,000 into 12,000 हाँ, डिवाइडेड बाय 32,000। प्लस करना पड़ेगा उसको। हाँ, तो आर बी लोडेड 20,000। सो वी नॉट आ जाएगा 25 इंटू 20,000 इंटू 12,000 डिवाइडेड बाय 32,000 अपॉन यही वाली वैल्यू नीचे प्लस 5,000, राइट? अब जल्दी से कोई बता दो ये वैल्यू क्या है? ये है 15 वोल्ट। 15 वोल्ट है, मैं बोल रहा हूँ। अब उसके बाद कुछ नहीं, रेशियो बताना है वी नॉट अपॉन 25। वी नॉट अपॉन 25 कितना है? सिंपली मेरे को पता है नो लोड पे वी नॉट 20 वोल्ट है, 20 को डिवाइड कर दिया 25 से, वो आ जाएगा 0.8। नो लोड पे वी नॉट कितना है दीपाली? सो हमने क्या किया, सिंपली 20 डिवाइडेड बाय 25 विच इज 0.8, और डी पे पूछा है वी नॉट अपॉन 25 ऑन लोड। कितना हो गया दीपाली? ए कितना है? 15 0.6 हुआ ना? कैलकुलेशन नहीं किया था सर। ओके। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात मान लो। 1 2 3 4 6 ये वाला क्वेश्चन। अब मेरे को बताओ ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? एनीवन? किसी प्रकार से कोई आइडिया है? अच्छा मेरे को ये बताओ राजा, बीच बीच में तुम्हारे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, आई वांट यू टू टेल मी ये कौन सा कनेक्शन है?
आमिर, जी सर। ये कौन सा कनेक्शन है जो मैंने अभी ये इसमें बताया, ये वाला? स्टार कनेक्शन है ना? 1 2 3 यस सर, स्टार जी कनेक्शन। स्टार ही है। और स्टार उसको कनेक्शन। सर सीरीज भी बोल सकते हैं ना? क्या बोल सकते हैं? नहीं, ये सीरीज है कहाँ ना? ये सीरीज नहीं है। ये स्टार, ये डेल्टा कनेक्शन है। ये डेल्टा कनेक्शन है। स्टार डेल्टा पॉइंट कनेक्शन क्या होता डेल्टा कनेक्शन क्या होता है दीपाली? डेल्टा कनेक्शन क्या होता है? सब एक के पीछे एक कनेक्टेड होते हैं ना, ऐसे। हाँ। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, क्योंकि ये और ये नोड तो सेम ही है ना। मैंने सिर्फ इसको थोड़ा सा खोल दिया, इसको थोड़ा सा खोल दिया, ओके ओके। है ना? तो ये डेल्टा कनेक्शन हुआ। यस। अब इस डेल्टा कनेक्शन में अब मेरे को जल्दी से बताओ इसकी स्टार वैल्यू क्या होगी? आर ए, आर बी और आर सी, इसकी वैल्यू कोई बताएगा? फॉर्मूला लगाइए सर, जो आपने बताया कि एडजेसेंट वाले को देख लेंगे। हाँ तो लगाओ, लगाओ, कोई लगा दो मेरे लिए। कोई लगाएगा? ये मेरे को ही RB लगाना प्लस है। RC। स्टार में आर बी क्यों लिखा हो? कंफ्यूजन होता है ना फिर। 20 क्या करूं मैं? अच्छा सॉरी, तो R1 कंफ्यूजन। R2 R3 लिखना। लो, R1 R2 R3। अब तो तुम्हारे को ही आंसर बताना पड़ेगा, अब मैं नहीं बताऊंगा। अब R1 R2 R3 लगवाया ना तुम, इसका मतलब तुम्हारे को इजी हो जाएगा बताने में, तो अब बताइए R1 क्या होगा? 10 into 20 सर डिवाइडेड 10 बाय, into 20। हाँ, डिवाइडेड बाय 40। 40 होगा हाँ। ना? यस यस। R2 कितना? सबका R2 ऐड कितना करना। होगा? 10 into 10 डिवाइडेड बाय 40। और R3 होगा 10 into 20 डिवाइडेड बाय 40। यस सर। चल, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा टोटल? 2 5 हुआ, ये हो गया 1 upon, नो 5 कहाँ हुआ ये? सर ये कितना पूरा हुआ स्क्रीन नहीं दिख रहा है। 200 डिवाइडेड पूरा? स्क्रीन नहीं दिख रहा है पूरा। 200 डिवाइडेड बाय 40 सर। सॉरी, मैंने जूम किया था सर, सॉरी। अच्छा दिख रहा अच्छा है। अच्छा अच्छा, कोई बात। मैं पूछ रहा था ये 10 into 20 डिवाइडेड बाय 40, ये 5 ही होता है ना? अब इसका बता दो। 10 into 20 10, डिवाइडेड बाय 4, यस सर 5। हाँ, अब 100/40 कितना होता है? डिवाइडेड बाय 4, 2.5। और ये 5, ठीक है। R1 R2 यस सर। R3 की वैल्यूज आ गई। अब इस सर्किट को एक और बारी बनाते हैं अच्छे से। ये सर्किट हुआ 30 ohms का। ये R1, ये R2, ये R3, ये 10, ये 20। हाँ, अब मेरे को बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब तो इजी हो गया ना आमिर? इजी हो गया। R2 और 10, R3 20 एडिशन करेंगे पहले। नीचे वाली फिगर तो समझ आ गई सर, ये जो R1। मैं बताता हूँ आराम से, एक एक करके, एक एक करके। मुझे ये बताओ, ये वाला जो सर्किट है, ये सर्किट पैरेलल में कनेक्टेड है? हाँ सर। पैरेलल में कनेक्टेड है। अब इनका आंसर बता दीजिए जल्दी से मेरे को। सो R2 + 10 पैरेलल ऑफ R3 + 20, इसका आंसर क्या है? 12.5 पैरेलल ऑफ 25। कितना आया? एनीवन?
15 आ रहा है क्या? 50 नहीं क्या? 50 ये नहीं, 12.5 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 37.5 होगा ना। नहीं वैसे किया मैंने, लेकिन मेरा तो 8.333 आ रहा है। एक मिनट। ज्यादा कैसे आएगा? 12.5 पैरेलल 25 50 कैसे आ सकता है? एक मिनट। आया? यही कर रहे हो ना तुम, इधर देखो। 12.5 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 12.5 प्लस 25। यस सर। हाँ तो ये कैसे आ सकता है? 8.333 आ रहा है। ठीक है, ये देख लेना तुम, 8.333 आएगा। अब इस सर्किट को हम फिर से कैसे लिख सकते हैं? 30 R1 और 8.333 ओम्स, राइट? है ना? किसी का आंसर आया क्या वो 8.33 सर? राजा, एक बारी जल्दी से 12.5 पैरेलल 25 का आंसर बता दो। आमिर, फिर से बताइए सर। मेरे को 12.5 इसका आंसर बता के बताओ। 12.5 पैरेलल 25 का। दीपाली कह रही है 50 आएगा इसका आंसर। मैं कह रहा हूँ 8.33 आएगा। कौन करेक्ट है? कोई बता रहा है? राजा जी, दीपाली तुम कर क्या रहे हो? मेरे को बताना, कैसे कैलकुलेट कर रहे हो? 12.5 मल्टीप्लाई 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 12.5 प्लस 25 कितना आ रहा है सर आंसर? आया बराबर सर। हाँ तो अब इतना इतना यही आ टाइम रहा नहीं है लगना चाहिए। 8.33 सर। नहीं, और किसी क्या ने भी कर नहीं रहे बताया इसलिए मेरा। हो? दूसरी चलो कोई नहीं। ठीक है, मुझे अब लगा। R1 हमारे पास गिवन है 5 ओम। अब क्या है? अब सिंपली ये दो सर्किट पैरेलल में कनेक्टेड है ना। 30 ओम पैरेलल R1 प्लस 8.333, राइट? तो मेरे को RAB की वैल्यू बता दो जल्दी से। इसकी वैल्यू बता दो। का वैल्यू आएगा 30 मल्टीप्लाइड बाई, पहले तो 8.33 प्लस 5 करेंगे 13। 13.33। हम्म 30 मल्टीप्लाइड बाई 13.33 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 13.33। कितना आ रहा है इसका आंसर? कितना आ रहा हाँ इसके आसपास ही आएगा। यस सर। है? आया दीपाली? यस सर, यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और सर, और अभी और कितने क्वेश्चंस हैं? 24 है टोटल। जब तक मेरी, मैं तो 6 बजे तक ये क्लास चलाऊंगा। तो अगर तुम्हारे को बैठना है तो बैठ सकते हो। 4 मिनट अभी और हैं। 4 मिनट हैं अभी। इस क्वेश्चन को करते हैं। अब मेरे को बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे दीपाली? तो पहले उसको करना पड़ेगा 30 ओम नहीं, पैरेलल। नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, ओके। ये क्या है? स्टार कनेक्शन। इसको डेल्टा में कन्वर्ट करें। इसको डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं?
अब मेरे को आर ए की वैल्यू बता दीजिए, आर बी की बता दीजिए और आर सी की बता दीजिए जल्दी से। डिनोमीटर को 20 ओम आएगा। आर ए क्या क्या आर ए कितना आएगा? नहीं आर ए तो 5 आएगा डिनोमीटर। हाँ तो डिनोमिनेटर 5 कर दिया, ऊपर क्या आएगा? ऊपर उनका एडिशन 10 इंटू 20 प्लस, हाँ कोई बोला बीच में? नहीं 10 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 20 R1 R2 R2 आएगा। मैं लिख देता हूँ 50 में, मेरे को वो पता है, मेरे को आंसर बता दीजिए कोई। सर वो बहुत फास्ट बताते हैं आप पूछते हैं, मतलब इतना होता नहीं है जल्दी 50 प्रैक्टिस में। 70 70 ग्रेट। आर बी कितना आएगा मेरे पास? ये ऊपर का कांस्टेंट है, नीचे का चेंज हो जाएगा, नीचे क्या आएगा? 20 राइट। 20 यस। आर सी में भी 350 कॉमन है, नीचे क्या आएगा? 10। ये वाली वैल्यू हो जाएगी 17.5 राइट। यस सर। हाँ 350 हाँ, अब हम इस सर्किट को एक बार बनाते हैं आराम से। ये कितना है? 70 17.5 35 15। अब मेरे को बताइए क्या नाम है दीपाली, 30 और 70 पैरेलल में है और 35 और 15 पैरेलल में है, दोनों का आंसर? ऐड हो जाएगा सर। Hello, Swastik. हाँ This is हाँ हाँ Swastik. This is Murli calling from NPTEL team. ये So there is another event around 6 o'clock. So you have to complete it before 6. okay, so I'll wrap up just Yeah. sorry. Please wrap it up so that other person can join, because simultaneously 2 sessions, no more than 2 sessions cannot. Okay. We can. Okay. Have. Okay. Yeah. Okay. Please Sorry. summarize it and then quickly. Yeah. Thank you. Okay. Swastik. Bye. No worries. Bye. Okay, so I'll just quickly summarize it. So in this class, we discussed resistance, what exactly is resistance, what's Ohm's law, power in What terms is of Kirchhoff's law? resistances, nodes, branches, loops, Kirchhoff's law, and connection of resistors and Yes, star sir. delta transformations, right? And we did some questions on that, how to calculate the different and how to calculate different stuff from that exercise, right? So I Yes. request you to go through that exercise once more, go through this lecture again, and if you have any doubts, you can always feel free to write it in the discussion forum. Okay. Thank you, Thank sir. you. It was really Thank you, everyone. interesting. Thank you. No worries. Okay. Thank you, Bye. sir. Thank you.